His Excellency Shri Vinai Kumar Saxena, the Honorable Lieutenant Governor, Delhi, Shri Arvind Kejriwal, Honorable Chief Minister, Delhi, Shri Kailash Gehlot, Minister of Revenue, Delhi, Air Marshal Sandeep Singh, PVSM, AVSM, VM, ADC, Vice Chief of the Air Staff, Chandra Bhushan Kumar, Principal Secretary to the LG, Lieutenant General Dheeraj Seth, AVSM, General Officer Commanding Delhi Area, distinguished guests from the armed forces, both serving and retired, senior officials of the Delhi government, ladies and gentlemen, Jai Hind. I am Commodore Ajay Saxena, retired Secretary of the Rajya Sainik Board, and would conduct you through the proceedings of the day. It's an honor for me to host the Armed Forces Flag Day function this year at the present venue and not through a virtual platform as was necessitated due to COVID pandemic in the last 2 years. Before we start the proceedings, may I kindly request all to observe a 2-minute silence in memory of the soldiers who made the supreme sacrifice in the line of their duty towards protecting the honor and integrity of our country. Ladies and gentlemen, may please rise. Ladies and gentlemen, please be seated. To start the proceedings, may I now request the Principal Secretary, Revenue cum Divisional Commissioner to give the welcome address. Sir. Honorable Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena ji, Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Minister Revenue Kailash Gehlot ji, Air Marshal Sandeep Singh, Vice Chief of Air Staff, my colleague Chandra Bhushan Kumar, Principal Secretary to LG, Lieutenant General Dheeraj Seth, GOC Delhi Area, distinguished guests from armed services, both serving and retired, senior officials from the government, ladies and gentlemen. I warmly welcome all of you to this momentous occasion. Role of armed forces in our society, or for that matter in any society, is very, very important. If the borders are safe, the society is safe. If borders are well protected, then society can focus on development and it can grow. So, there is no doubt on that, and not in our case, not just borders, but our internal security also poses a lot of threat. And armed forces have been doing a wonderful job. I have no words to express the gratitude which they deserve in protecting the country. The members of the armed forces have laid down their precious lives. Their family come under distress, financial distress, emotional distress, and therefore it is bounden duty of all of us to collectively come together and support them in whatever way we can. This
Day, Armed Forces Flag Day, is basically about remembering, recalling the good work that armed forces do and contributing in whatever way that is possible. In fact, there is another area which is very, very important and which is relevant in respect to armed forces. I was looking at the website of Kendriya Sainik Board. Roughly 60,000 people retire every year. It's a big chunk, and they become ex-servicemen. They retire at a young age, and therefore they also need to be looked after. Unlike other services, people continue up to 60 years and even beyond, and that is why they need a special kind of support. Raj Sainik Board has been doing this job to play the role of interface. On the one side, the armed forces, personal ex-servicemen, Viranganai, the dependent members, and on the other side, the government. It is running various schemes of financial assistance for ex-servicemen, for war widows, disabled, grand citizens, and other ex-servicemen. It is also running merit scholarship, marriage grant, and basically facilitating the ex-servicemen once they are back into the society and they need support. So if the Raj Sainik Board helps them. Our collections have ranged from 9 lakh to 34 lakhs. Maximum that we have touched is 34 lakhs. 9 lakhs was during COVID time. And our expenditure, maximum that we have touched is 30 lakhs. So if we do well in terms of collections, it is very easy to utilize expenditure that typically occurs, and in fact we can raise the expenditure for the welfare of ex-servicemen. On this occasion, I formally call upon all of you and everyone to spread the word around so that every citizen, everybody takes this opportunity to contribute magnanimously and graciously towards the cause. It is great cause, it's a noble cause. Thank you very much. Jai Hind. May I now request the Honorable Lieutenant Governor, sir, to kindly release the Armed Forces Flag Day brochure. Very briefly, the brochure highlights the salient activities conducted by the Rajya Sainik Board over the last year, as also the details of the various grants and aids disbursed by the Rajya Sainik Board. The brochure also brings out very briefly the activities undertaken by the service headquarters in dealing with the affairs of the ex-servicemen. We look forward to receiving feedback to make it more meaningful and interesting. Thank you, sir. Before I request His Excellency the Lieutenant Governor of Delhi to formally launch the Armed Forces Flag Day Fund Collection Campaign, may I call on stage my team from RSB to pin the flags on the dignitaries.
as already requested by our Divisional Commissioner, sir, please spread the word so that people are sensitized and they donate generously for this noble cause. The campaign would be carried throughout the year. We approach the schools and other government institutions to join in and help us in this cause. May I now request Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal, sir, to kindly address the participants on this occasion. आदरणीय एलजी साहब, मिनिस्टर रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल एलजी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, उनके परिवार के सभी सदस्य, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सबको आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग शायद 2 साल के बाद मिल रहे हैं। पिछले साल मिले थे लेकिन कोरोना की वजह से वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुई थी ये वाला सेरेमनी, लेकिन अब हम सब लोगों को कोरोना से होपफुली निजात मिल गई है और बहुत अच्छा लग रहा है कि फिजिकली आज ये कार्यक्रम हम सब लोग फिर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज का दिन है जब पूरा देश एक तरह से फॉर्मली सबके सामने अपने आर्म्ड फोर्सेस का आभार व्यक्त करता है। वैसे तो 365 दिन ही पूरा देश आपका आभारी रहता है। जिस तरह से आप अपनी जान की बाजी लगा के सेना बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा करते हैं, 365 दिन ही आपका देश आभारी है। लेकिन आज एक मौका होता है जब फॉर्मली हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक वो ज़माना था जब देश आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा, हम लोगों ने आज़ादी पाई, लेकिन उस आज़ादी को बरकरार रखना, कायम रखना बहुत ज़रूरी था। वो आप लोग कायम रखते हैं जब बॉर्डर के ऊपर अपनी जान की बाजी लगा के आप देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखते हैं। हम अपनी दिन ब दिन की ज़िंदगी में कई बार उसका एहसास नहीं कर पाते कि आप कितनी कठिनाइयों से, चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे वो कठोर धूप हो, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो नेगेटिव टेम्परेचर हो, उन सब को बर्दाश्त करते हुए किस तरह से आप देश की रक्षा करते हैं। पूरा देश इस बात के लिए आभारी है। राज्य सैनिक बोर्ड को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली का राज्य सैनिक बोर्ड बहुत एक्टिव है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता रहता है और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो राज्य सैनिक बोर्ड के जरिए दिल्ली सरकार कर रही है। और भी जो भी करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। दिल्ली सरकार ने खासकर एक स्पेशल योजना लागू की हुई है कई सालों से कि अगर कोई भी जवान बॉर्डर पे काम करते हुए शहीद होता है इन लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। इसका सभी ने काफ़ी स्वागत किया, सभी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से हमें काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस आए। लेकिन इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन की बात नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। हाँ, ये तो बहुत छोटा है, 1 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं होते किसी की ज़िंदगी के लिए, शहादत के लिए। इसको कॉम्पेंसेशन भी नहीं कहा जा सकता, इसको तो एक तरह से सम्मान राशि हम लोग बोलते हैं। मैं खुद पिछले 6-7 साल से दिल्ली में ये लागू है। मैं खुद कई सारे ऐसे जवान जो शहीद हुए थे उनके घर में खुद चेक लेके गया था, उनको मैं खुद दे के आया था। तो जैसे मैंने कहा, राज्य सैनिक बोर्ड के ज़रिए और जो कुछ करने की ज़रूरत होगी हम वो सब करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू एश्योर यू दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू एंड आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आप लोगों के साथ खड़ा है। अगेन आज फ्लैग डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. I now come to another important facet of this function, that is felicitating the armed forces personnel who hail from Delhi and have been bestowed with gallantry and distinguished service awards by the President of India. This year we had received 20 applications from 17 applicants
4 for Gallantry Award, and 16 for Distinguished Service Awards. A few awardees, however, could not make it to the function due to official necessity. I would now read out the names of the awardees and their award based on the order of precedence of the National Award. Due paucity of time, I would only elaborate the citations of the Gallantry awardees. May I please once again request His Excellency, the Lieutenant Governor of Delhi, to kindly hand over the cash award checks. You would like to come front, Sidal? Sir, abhi aa gaya. Sit for my steps. So first step. I start first with the Gallantry awardees. Major Mohit Malik, Bar to Sena Medal. On 25th January 2020, Major Mohit Malik, Sena Medal, while operating in general area Anantnag in Jammu and Kashmir, received specific inputs regarding known presence of hardcore terrorists. The officer firstly established an area cordon to prevent the terrorists from escaping, and thereafter confirmed the presence of the terrorists in the area. By then, the terrorists resorted to indiscriminate firing and lobbing of hand grenade towards the team led by Major Mohit Malik in their attempt to escape. During the fight that ensued, his buddy sustained a gunshot wound. Without thinking about his own safety, the officer immediately brought his buddy under safe cover and ensured safe evacuation. The officer subsequently controlled the situation and closed towards the target house in the face of heavy fire from the terrorists. Major Mohit Malik, Sena Medal, displayed conspicuous gallantry and unflinching fighting spirit and fired from limited cover to neutralize one terrorist in an intense close quarter battle. The slain terrorists were later identified as Qari Yasser, a resident of Pakistan belonging to Jaish-e-Mohammed, an A++ category terrorist. For displaying extraordinary tactical acumen, dauntless courage, sterling leadership qualities, and self-example with utter disregard to personal safety, leading to neutralizing of one hardcore terrorist, Major Mohit Malik was awarded Sena Medal Bar. Major Mohit Malik. Lieutenant Colonel Chetan Kaushik, Sena Medal. On 6th March 2021, Lieutenant Colonel Chetan Kaushik piloted a casualty evacuation mission in the Kargil sector while operating at heights greater than 14,500 feet. The mission posed overwhelming challenges due to non-availability of helipad, extreme high altitude, turbulent weather, and proximity to the line of control. The pilot decided to carry out evacuation by winching, which had never been attempted at this altitude and the available terrain configuration. The operation required flying without doors in -20 degrees freezing conditions. Despite the challenges, he reeled in the semi-conscious casualty with absolute precision. The officer therefore successfully piloted the helicopter using his superior flying skills over the isolated post in adverse weather conditions and also keeping flight safety in mind. This unprecedented and courageous feat, carried out in the extremes of weather, testing machine capabilities and under direct enemy observation, resulted in timely evacuation of the casualty. For displaying unparalleled professionalism, indomitable courage, and unflinching resolve that resulted in saving a life, as also boosting the morale of forward troops, the officer was awarded Vayu Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel Chetan Kaushik. Major Manish Chahal, Sena Medal. On 22nd January 2020, based on intelligence regarding presence of 2 terrorists in his area of operation, Major Manish Chahal launched an operation to neutralize the terrorists. Having established the presence of the 2 terrorists, Major Manish Chahal deployed his team with tactical acumen and himself led the troops into the operation site, which was over a difficult terrain and under intense terrorist fire. During the operation, the officer was able to effectively pin down the terrorists with own fire and established a blockade to prevent their escape. As the team, led by the officer, moved in towards the target location, the terrorists fired indiscriminately in their bid to escape.
The officer, displaying undeterred determination and unmindful of personal safety, kept advancing towards the terrorists. With excellent knowledge of the terrain, he was able to close in from an unexpected direction that utterly surprised the terrorists. In the process, the officer neutralized the terrorists in a close quarter battle, who was later identified as Abu Qasim alias Abu Saifullah of Jaish-e-Mohammed. For displaying conspicuous courage, commendable leadership, and camaraderie under intense fire that resulted in elimination of one terrorist with no collateral damage, Major Manish Chahal was awarded Sena Medal Gallantry. However, due to operational requirements, Major Manish Chahal could not attend the function in person. May I therefore request father of Major Manish Chahal, Shri Subhash Chand, to kindly come up on stage and collect the award on behalf of his son. I would now call on the names of the awardees bestowed with Distinguished Service Medal in the order of the seniority of the medal awarded. May I request the awardees to please come up on the stage to receive the award from the Honorable Lieutenant Governor. Due paucity of time, I would, however, not be reading out the citation. Starting with Air Marshal Sandeep Singh, PVSM, AVSM, VM, ADC, Vice Chief of the Air Staff, for being awarded the Param Vashisht Seva Medal on 26 January 2020. Air Marshal Sandeep Singh. Lieutenant General Anil Puri, AVSM, SM, VSM, Additional Secretary, DMA, for the award of Ati Vashisht Seva Medal on 26th January 2021. Lieutenant General Adosh Kumar, AVSM, SM, Director General Land, Works and Environment, for being awarded Ati Vashisht Seva Medal and the Sena Medal, both for devotion to duty on 26 January 21 and 26 January 2019 respectively. Lieutenant General Rajesh Kochar, AVSM, SM, VSM, retired, for being awarded Bar to AVSM on 26 Jan 2013. Major General Bhanu Pratap Singh, AVSM, for the award of AVSM on 26 January 2021. Air Commodore Manu Chaudhary, AVSM, VM, retired, for the award of AVSM on 26 January 2019. Brigadier Paramveer Singh, VSM, for the award of Vashisht Seva Medal on 26 January 2021. So with this, we come to the end of the felicitation of the awardees.
May I now request His Excellency, the Lieutenant Governor of Delhi, to kindly address the participants on this occasion. दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, एयर मार्शल संदीप सिंह जी, वाइस चीफ एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी, जीओसी दिल्ली एरिया, अश्विनी कुमार मंडलायुक्त, रक्षा क्षेत्र के गणमान्य अतिथि, सचिव राज्य सैनिक बोर्ड, गैलेंट्री अवार्ड विजेता एवं मेडल विजेता, देवी और सज्जनों, आज हम यहाँ शहीदों सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। देश की सुरक्षा के लिए अपनी आहुति देने वाले हमारे तमाम सैनिकों को मैं सलाम करता हूँ। यह अवसर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने का वक्त है। हम सब हमेशा शहीदों के ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये वही जवान हैं जिन्होंने बगैर अपने परिवार की चिंता किए हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। सशस्त्र झंडा दिवस हमें हमारे घायल सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की देखभाल करने के लिए अपना दायित्व क्या है उसे याद दिलाने की भी कोशिश करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों में हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखने में हमारे सभी सैनिकों का कितना बड़ा योगदान है। जैसा कि ऑनरेबल सीएम ने कहा, ये दिन तो हम आज मना रहे हैं, लेकिन शायद हमें 365 दिन इस दिन को मनाने की जरूरत है। हम अपने सैनिकों के इतने ऋणी हैं कि जब उनकी कुर्बानियां बॉर्डर्स पे होती हैं, इसी वजह से हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। परिवार के मुखिया के निधन पर एक उस परिवार पर क्या बीतती है, इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा सैनिक देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है और उस वक्त ये नहीं देखता, उस वक्त ये नहीं सोचता कि मेरी कुर्बानी के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। इसीलिए आज जरूरत है कि हम सब मिलकर हमारे जो सैनिक हैं उनके सम्मान में हमेशा से खड़े रहें। जहां उन्हें जरूरत हो हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनकी मदद करें। राज्य सैनिक बोर्ड, जैसा मुझे बताया गया, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके बजट के बारे में भी सर श्री कुमार ने जो बताया, मैं समझता हूं कि बहुत कम है। आज जरूरत है हमें कि इसके बजट को बढ़ाया जाए, यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज़ को और बढ़ाया जाए और ये कोशिश की जाए कि हम किस तरीके से अपने जवानों को, अपने अफसरों को जो सेना से जुड़े हुए हैं, कैसे उन्हें और मजबूत करें। उन परिवारों को जिनके परिवारों के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको कैसे और मजबूत करें। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 4 जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना करने के ऑर्डर्स किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सैनिक बोर्ड्स के माध्यम से हम जितने भी हमारे एक्स सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं,
उनकी जो कुछ भी मदद कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। मैं ऑलरेडी इस प्लान को बना रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक्स आर्मी पर्सनल को रोज़गार दे सकते हैं उन्हें देने की कोशिश करें। जनरली जब हमारे फौजी रिटायर होकर सैनिक बोर्ड से जुड़ जाते हैं, बहुत से यंग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी चोट की वजह से उनको रिटायर होना पड़ता है, तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम कैसे उनको अपने साथ एंगेज करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में अलग से चर्चा करूंगा और एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकें। और मैं ये आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त अभी जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जा रहे थे और उनका जो साइटेशन पढ़ा जा रहा था वो दिल को छू जाने वाला था। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने उन्हें सम्मान नहीं दिया है, बल्कि मैं सम्मानित हुआ हूँ उनको साइटेशंस देकर। मैं एक बार फिर हमारे जो फौजी हैं, यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो अक्सर मुझसे मिलते भी रहते हैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, उनको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें हम प्रायोरिटी पे हल करेंगे और आपको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे जहां आपको कहीं लाइन में खड़ा होना पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप यहाँ राजनिवास में आए और इस फंक्शन में शामिल हुए और मुझे ये मौका दिया कि मैं हमारे देश के महान सैनिकों के बीच अपने को खड़ा कर सकूं, मौजूद कर सकूं। मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हर कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं उन्हें पूरा सम्मान मिले। शायद आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा से सैनिकों के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं और जब कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर बहुत सारे काम किए हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब मैं गुजरात में था और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक होते हैं उनको पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। टैंकर से वहाँ BOPs पे पानी पहुँचाया जाता था और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं पहुँच पाता था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फौजी हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करने में कभी ढिलाई नहीं बरतते थे। उस वक्त नर्मदा के पानी को सबसे पहले पाइपलाइन के द्वारा बॉर्डर पोस्ट तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसकी वजह से वहाँ हमारे जो जवान बहुत कठिन परिस्थितियों में, जहाँ 52 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उनको पानी मिलना शुरू हुआ और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस आपके लिए हमेशा मौजूद है और आप कभी भी अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आ सकते हैं और जो मेरे बस में है मैं उसे हमेशा करने के लिए तैयार हूँ, प्रेरित हूँ और आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने मुझे ये मौका दिया मुझको सम्मानित करने का, आपको सम्मान देकर। थैंक यू वेरी मच। With this, now we approach towards the end of the function. All that remains is for me to sincerely thank everybody present over here for having participated in the event, and in particular
to the awardees who have made us all proud. I would wish to place on record our deepest gratitude and thanks to His Excellency Shri Vinai Kumar Saxena, the Honorable Lieutenant Governor of Delhi, to have taken time out from his busy schedule and consented to grace this occasion. Thank you, sir. Me and my team would also like to thank the Honorable Chief Minister of Delhi to have also consented to be a part of this event. Your concern for the armed forces personnel is well known, sir, for which we are utmost grateful. Thank you, sir. Lastly, but not the least, I deeply acknowledge the support and guidance that the Rajya Sainik Board has received from the Office of the Honorable Revenue Minister from time to time to enable us to discharge the obligation towards the retired armed forces personnel as also the serving personnel of Delhi area. Thank you, sir. Lastly, without the support of the Secretariat staff of the Honorable Lieutenant Governor, the arrangements that we see today would not have been feasible. Please accept a heartfelt thanks from the team of the RSB Delhi. Before I conclude, I would wish to reassure everybody that the Rajya Sainik Board Delhi stands committed to reach out to our ex-servicemen, the Veer Naris and their dependents through all available platforms to help them in every way feasible. Ladies and gentlemen, it now brings us to the end of today's function. Jai Hind. May I now request all the awardees to kindly please come and stand behind the stage for a group photograph. In the meantime, I would request all the guests to step to my left and join us for a cup of tea. Thank you all.